Okay, I think the recording has started now. Acha ji, so thank you for joining this demo session. My name is Khurram Amit Shazad, and I will be your German language instructor when you will actually join this course. So, a little about me. I worked in several multinational companies like S&P Global, CareCloud, Zones, and a few more. And I've lived in several countries during my professional career, and Germany is one of them. Um, I've led many training sessions, recorded webinars related to financial industries, and also taught languages to many students. And I can speak English, German, and also Spanish. And that's purely because language learning and teaching has always been my passion. So आपका introduction इंशाल्लाह पहली क्लास में हो जाएगा because I want to quickly jump over to the presentation and get the ball rolling. ठीक है जी. Um, the main motive behind this orientation session was to set up the expectations to give you an idea about what is included in this course, the course structure, the content, the methodology, and how good I am in explaining or imparting the knowledge I possess. So you will have a comprehensive and complete syllabus at your disposal that covers all the competencies of CEFR level A1. By the way, I'm reading this text on the slide, but let me explain. Basically, the structure and content of this course complies with CEFR level A1. So, does anyone know what CEFR is? Ever heard about it? No, sir. Acha, okay, no worries. I'll explain. The CFR stands for Common European Framework for Languages, and it was launched way back in 2001. The idea was to organize language proficiency in 6 levels, so A1 to C2, and there are further actually categorized into 3 levels, which are beginner, intermediate, and advanced. So basically, it's a standard or a yardstick to measure the language proficiency of a person, and it's applicable on all major foreign languages, German, French, Spanish, etc. So the basically the language mastery or proficiency is graded on a scale of A1 to C2. Okay? And with respect to each level, the course content is defined and explained. So basically, at the end of this course, you'll fall here at A1. I don't know if you're able to see my cursor. Here it is. So at A1, which is a bit beginners category, but I'm sure, I mean, you have the potential to, reach the higher levels if you stay motivated and consistent in learning German. So right now, basically, you're at A0 because you have little or no prior knowledge of the German language. So basically, you can say you're starting from scratch. But obviously, after a couple of months, you will, inshallah, reach A level, A1 level. And then you can appear in the Goethe Institute exam, and you should be able to pass it. But make sure, I always tell this to the students, stay consistent during these 8 weeks or 2 months. Consistency and hard work is obviously the key to learn any language, not just German. Okay, so let's quickly take a look at the course content and the structure. So basically, I've divided the course content into 8 modules for 8 weeks. But I'm sure during this phase, we'll learn more because we'll also talk about German culture, the Goethe exam format, the tips and tricks to pass the exam easily, etc. And as far as the content is concerned, I will just quickly summarize it for you. So you'll be able to greet or say goodbye to people, for example, Guten Morgen, Gute Nacht, Guten Abend, Auf Wiedersehen, Bis bald, bis später. And you'll also learn how to introduce yourself, tell your personal and professional details, and you can express your likes and dislikes. You can tell your activities and hobbies, and obviously also you can give a little description about your family. You can order food and drink, shopping, all these kind of things are included. So you'll be able to basically learn all these during the phase of 8 weeks. So these are like 8 modules. You can see 4 of them on this slide, and on the next slide I have the rest of the 4. um, so let's quickly jump on to the next slide
where I have explained the plan of action. Okay, now this is very important because we're going to follow this plan of action during this whole course. So the very first step, obviously, in any language is to master the alphabet and the pronunciation. And then you can go ahead and learn the most basic words, learn the key nouns, verbs, and adjectives. And then obviously at the later stages, you can actually spend some time on grammar and sentence structure, etc. Speaking and listening, that is, these are the two activities we'll do frequently over the 2 months. Um, and in the end, you can see here, create a mini Germany around you. Now, this is something you need to do at the beginner stage. मैंने खुद भी किया था because it helps you in remembering a lot of words related to vocabulary. For example, अगर आप sticky notes से अपने घर में आप sticky notes लगा लें कहीं दरवाजे पे, window पे, or it could be a bed, a table, or a chair, and you write down those German words. कि अगर दरवाजा है तो उसको क्या कहना है, detour कहेंगे आप उसको. If it's a chair, stool है, या it could be anything. uh, Fenster is window. So these kind of things will actually help you in remembering these words, क्योंकि जब भी आप उठ के देखेंगे पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये चीज बैठ जाएगी. Also you can have a chat with your friends. This is what I used to do way back, कि मैं chat में लिख देता था guten morgen, guten, wie ist das Wetter, मतलब how is the weather, इस तरह की basic phrases लिखता था. अब अगले को तो नहीं समझ आ रही, दैट इज फाइन, बट आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? You need to practice so that all these words are in your mind and they become part of your vocabulary so that you can later on um, speak fluently. क्योंकि अगर आपके जहन में words foreign आ जाते हैं तो it's becomes easier for you to talk and have a conversation with anyone. So this is basically the plan of action that we're going to follow during the course. Now I'll quickly jump over to a German lesson, and I'll try to reduce my speed here so that you can understand. आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए. Um, अच्छा, the reason why I have selected this topic for the purpose of demo is that the German grammar which you are going to study in the course depends on this lesson. So this is, you can say, a kind of foundation. And if you understand this and practice it well, you will have very few problems, in the German cases like nominative, accusative, and dative, जो के बाद में पढ़ेंगे. Uh, right now, let me explain this. So as you know, as you know that in English we have definite and indefinite articles. So can anyone tell me what is definite and indefinite article? Do you know this? It's a question for you guys. यस यस सर, जानता हूँ लेकिन मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आता. पहले तो जानते थे, ये वो इसलिए सारे ग्रामर वगैरह एग्जाम पास ठीक. किए, लेकिन अभी मैं भूल गया हाँ, हूँ. नहीं कोई मसला नहीं है, दैट्स फाइन. अभी मैं बताऊंगा तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा. जब ओके हम इंग्लिश में लिखते हैं द, THE, द, लाइक फॉर एग्जांपल द बुक, द कार, द बॉय, द, जब भी हम द लगा रहे हैं तो जो द वर्ड द है, THE, ये स्क्रीन पे भी आपको शायद नजर आ रहा होगा, इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश. ठीक है. और सिमिलरली इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल करते हैं हम. अ बॉय, अ गर्ल, अ वुमन. सो यू यूज द सेम, सिवाय जहां वॉवल्स आ जाते हैं वहां पे एन एग, एन एरोप्लेन हो जाएगा. तो ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द. मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है. बट इन जर्मन they actually categorize or classify into three categories based on the gender of the noun. ठीक है. So as you can see here, if a noun is feminine, तो वो article D होता है. Okay. अगर noun masculine है, तो फिर article der होगा. And similarly, if a noun is neutral, then the article is going to be das. So English में सिर्फ एक ही है आपके पास, the, but in German we have three different articles and classified according to the gender of the noun. ठीक है. So here we can see a few examples. The woman, die Frau. जर्मन में हम डी फ्राउ बोलेंगे वुमेन को. आप ये देखें यहाँ पे डी है, ठीक है, बिकॉज वुमेन इज अ falls in the feminine category. ठीक है. Similarly, we have the man,
In German, we say der Mann. Der is another, definite articles. German में हम इसको bestimmte articles भी कहते हैं. And then we have this third category, which is das. So the child is das Kind. So you can see here, English में हमारे पास एक ही था definite article, the woman, the man, the child. The repeat हो रहा है तीनों में. लेकिन here in German we have die Frau, der Mann, das Kind. So this article is changing with respect to the noun. Noun क्या है? ये Frau, Mann, Kind, ये तीनों noun है, ठीक है? So they fall under different categories, 3 different categories, which is die, der, das. So यहाँ तक I hope कि आपको clear होगी बात, right? It's not very complicated. यहाँ तक. And then we have indefinite articles, जो कि English में the होता है, जो a और an भी, sorry, the नहीं, a और an. So if a noun is feminine, the indefinite article in German is eine. लेकिन अगर noun masculine है या neutral है, तो फिर आप ein use करते हैं. a की जगह English में जो a होता है उसको ein use करते हैं if it's masculine and neutral. So some more examples. A woman, eine Frau. A man, ein Mann. And similarly, a child, ein Kind. Right? Do you have any confusion? I think it's clear, right? Yes, it is clear, sir. सही हो गया, okay. So let me proceed further on the next slide. Here actually you can see a few pictures. खातून है, एक बीच में एक बंदा है और एक बच्चा भी है. So आप ये देख सकते हैं कि जब D होता है हमारे पास definite article, तो indefinite article eine होता है. इसी तरह जब dare होता है, which is a masculine, for masculine nouns, we have an indefinite articles जिसको unbestimmte article कहते हैं in German. It is ein. And for das is for neutral and ein is an indefinite article for neutral. So here we have a few sentences. Das ist eine Frau, which means that is or this is a woman. Lekin with the definite article, you'll write the sentence like in this way. Die Frau ist elegant. The woman is elegant. Similarly, we have a few sentences for the masculine category. Das ist ein Mann. That is a man. Der Mann ist groß. The man is big. Das. Now we have das. Das ist ein Kind. This is a kid or a child. Das Kind is glücklich. You can see बच्चा खुश है, so that's why glücklich means happy. The kid is happy. Okay. So let me go on. So now on the screen, you can see a couple of tables. On the left hand side, we have a table that describes the gender. And with respect to each gender, we have definite and indefinite articles. तो feminine जो मैंने आपको पहले बताया category में definite article D होता है और indefinite article eine होता है, ठीक है? And for masculine, we have definite article der and indefinite article ein. And for neutral, it's das and ein. So here we have some more examples. The man जो है वो masculine category में है, तो आप in German the definite article use करेंगे der Mann और indefinite ein Mann. यानी कि the man, a man, ठीक है? Similarly for women, which is in feminine category, we have die Frau, eine Frau, the book, which falls under the neutral category, das Buch, ein Buch. And so on. You can see here der Stuhl, ein Stuhl, das Fenster, ein Fenster, die Tour, eine Tour. इसी तरह हमारे पास the bag है, which is a feminine noun. So यहाँ पे मैंने eine Tasche लिखा है. So what do you think? What should come here? यहाँ पे मैंने blank छोड़ दिया है. So यहाँ पे क्या होना चाहिए? Definite article क्या होना चाहिए? अगर feminine है सर तो फिर तो D आएगा. Die Frau. Yeah, feminine है. Die Frau, sir. Yeah, die Tasche. Eine Tasche? Die Tasche. Yes.
एग्जैक्टली, द बैग, क्योंकि फेमिनिन है इसलिए डी लगेगा, डी था। ये देखिए ऊपर द डोर भी फेमिनिन था तो हमने डी यूज किया था। And similarly we have the car which is falls in the neutral category, das Auto. So what should be the indefinite article? अगर हमें कहना Ein, हो sir. ये तो Ein, yes, ein. ein, exactly Fine, sir. ein, Okay. perfect। इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल जब भी होता है, ये देखें फेंस्टर की एग्जांपल देखें, das Fenster, ein Fenster। अच्छा, द गर्ल जो है, इट्स अ वेरी यूनिक एग्जांपल, यूनिक केस। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, आई रिमेम्बर कि गर्ल को मैंने, आई थॉट कि इट फॉल्स अंडर अ फेमिनिन कैटेगरी, बट आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। द गर्ल को जर्मन लोग जो हैं, दे एक्चुअली पुट इट इनटू अ न्यूट्रल कैटेगरी, व्हिच इज सरप्राइजिंग फैक्टर रियली, कि व्हाई द गर्ल इज अ न्यूट्रल, राइट? इसको फेमिनिन होना चाहिए। सो इफ इट्स न्यूट्रल, तो यहाँ पे जो आर्टिकल मैंने लिखे नहीं है, मेर्चन कहते हैं, गर्ल को मेर्चन कहेंगे, तो व्हाट शुड बी द आर्टिकल हियर? इट्स न्यूट्रल कैटेगरी। Die Machon. नहीं नहीं, न्यूट्रल है, दास मेर्चन, Das. Das Machon, yes. फेमिनिन नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर फेमिनिन होता Yes. फिर डी होता, लेकिन यहाँ पे दास मेर्चन आएगा, और सिमिलरली फॉर Ein. आइन मेर्चन, एग्जैक्टली, Eine परफेक्ट। Machon. नॉट आइन है, आइन। आइने होता है फेमिनिन के लिए, मैस्कुलिन के लिए होता है, मैस्कुलिन और न्यूट्रल दोनों के लिए आइन यूज करते हैं हम। सो आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा विद दीज एग्जांपल के व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? Yes, yes, sir. Okay, so the next one is here. So basically it's introduction, as you can see here in German. So एक लड़की है सारा, उसका इंट्रोडक्शन है, और इसमें वो अपने बारे में कुछ बता रही है। So let's read this. Um, Hallo, guten Tag. Ich heiße Sarah. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Karachi. Ich habe einen Bruder. I think I forgot to write. It should be einen, by the way, not ein. Okay. Okay. So ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich bin Studentin. Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich lerne Deutsch, weil ich es für mein Studium brauche. ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको हो सकता है समझ ना आए। सो हेलो, गुटन टाग, इट्स अ ग्रीटिंग। जब आपका जिस तरह हम गुड डे इंग्लिश में कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। ग्रीटिंग है जर्मन में, विच मीन्स हेलो हेलो, गुड डे। ठीक है, टाग इज डे। इश हाइसे सागा, सो हियर इट मीन्स कि आई एम कॉल्ड सारा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में और नाउन्स होते हैं, तो यहाँ पे हाई से जो है वो वर्ब है, और सारा इज अ noun. Ich bin 25 Jahre alt. I am 25 years old. Ich wohne in Karachi, which means I live in Karachi. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. I have a brother and a sister. Ich bin Studentin. I am a student. Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. I speak English and a bit of German. Ich lerne Deutsch, weil ich es für mein Studium brauche. I'm learning German because I require it for my studies. Study means studies. तो यहाँ पे कुछ चीजें जो नोट करने वाली हैं, आप देखें कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, और बोल्ड कह लें, यू नो, इन अ बोल्ड अल्फाबेट्स हैं, टाग, ब्रूडर, श्वेस्टर, स्टूडेंटन, इंग्लिश, डॉयच, स्टूडियम, ये तमाम वर्ड जो हैं बोल्ड हैं थोड़े। ये तमाम नाउन्स हैं। सो जर्मन में हमेशा नाउन्स कैपिटलाइज होते हैं। आप देखें टाग का टी जो है वो कैपिटल है, ब्रूडर का बी कैपिटल है, तो नाउन्स को हमेशा आपने कैपिटलाइज करना होता है। इसका कहने का मकसद ये है कि जो पहला अल्फाबेट है जो उस वर्ड का, वो हमेशा कैपिटल होगा, रिगार्डलेस के वो कहाँ आ रहा है नाउन, यू नो, इन द होल सेंटेंस। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो दैट इज अ मिस्टेक, लेकिन जर्मन में अगर कैपिटल अगर आप नहीं करेंगे तो दैट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन जर्मन। अच्छा, इसके अलावा हमने जो वर्ब्स यूज किए हैं, जिस तरह हाई से था, इश हाई से सारा, इसमें हाई से वर्ब था। नेक्स्ट में इश बिन जो यूज हुआ है, बिन एज अ वर्ब। सो जर्मन में एक रूल है कि
जो वर्ब है, अगर सिर्फ एक वर्ब है तो उसकी सेकंड पोजीशन होती है इन अ सेंटेंस। तो आप देख लें, इश हाई से सागा में सेकंड नंबर पे जो वर्ड है, इट इज अ वर्ब। इश बिन, बिन सेकंड पे है, इट्स अ वर्ब। सिमिलरली इश वोना, वोना मीन्स टू लिव, वोनन से निकला है, इट्स ऑल्सो अ वर्ब। और इन तमाम की सेकंड पोजीशन है, देख लें, हाइस, बिन, वोना, हाब, यहाँ पे भी बिन है, स्प्रेश, लर्न। लेकिन यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में आप नोट करेंगे कि इसमें दो चूंकि वर्ब्स हैं, इसलिए एक वर्ब तो आपका यहाँ पे है सेकंड पोजीशन पे, एंड द सेकंड वर्ब इज एट द एंड। सो दिस इज हाउ you know when you're making sentences, this is the placement of verb, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक तरीका जो उसने सारा ने अपना नाम इंट्रोड्यूस किया है, बताया है, वी हैव टू मोर वेज ऑफ टेलिंग नेम। आप ये भी कह सकते हैं इश बिन सागा, अगर वो कहती तो आई एम सारा, इश बिन सारा इज ऑल्सो राइट। और इसका एक और वर्जन भी है विच इज मोर ऑफ एन इंग्लिश वर्जन, माई नाम इज सारा, कि माई नेम इज सारा। सो दीज आर जस्ट अ फ्यू वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। ईदर वन ऑफ दीज थ्री जो मैंने आपको तीन बताए हैं वो ठीक है, उसमें कोई भी अगर आप तरीके से बता रहे हैं अपना नाम, तो यू आर परफेक्टली ऑल राइट। I think that's pretty much. I don't want to go into further details क्योंकि ये तो खैर ओरिएंटेशन सेशन था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा था। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा, that is actually not required at this stage. So when you will start the classes, जब आप join करेंगे तो इंशाल्लाह फिर we'll have some more discussion about the German and everything. In fact, obviously जो course में covered है. So yeah, that's it. Do you have any questions? यस ओके सर। सर तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? रिकॉर्डेड आपने बंद किया सर? यस जी क्लासेस मेरा प्रोग्राम तो 13th से स्टार्ट करने का है, लेकिन हो सकता है कि मैं जल्दी भी कर दूं, लाइक मे बी थर्सडे, थर्सडे ऑफ दिस वीक आई मीन। या सो सर और स्टूडेंट्स होंगे या नहीं सर? यार एक्चुअली इसमें थोड़ा सा होता ही है कि एवरी वन हैज हिज ओन प्रेफरेंस। कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमने वीकेंड्स पे पढ़ना है, कुछ कहते ओके हैं जी हमारी ये टाइमिंग होनी चाहिए। इट रियली डिपेंड्स, सो आई ओके डिसाइड अकॉर्डिंगली। सो मैं किसी को ज़्यादा पुश तो नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आप इसी टाइम पे पढ़ें, ओके ओके क्योंकि देर आर पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। मतलब प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो कि जर्मनी जाना चाह रहे होते हैं और दे स्टडी A1 और मे बी यस A2 पढ़ रहा होता है कोई। सो एवरी वन हैज हिज ओन प्रेफरेंस, बिकॉज उनकी मसरूफियत होती है, स्टूडेंट्स के अपने प्लान होते हैं। और सो मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है उनकी व्हाटएवर दे सेइंग और व्हाटएवर दे प्लान इज, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल इन इट। ओके। और सर ये है कि मतलब जितने भी किसी भी दिन हो लेकिन 2 दिन क्लासेस होंगे ना सर हफ्ते में? नहीं नहीं, क्लासेस हफ्ते में 2 दिन नहीं होंगी, इट्स लाइक 5 days। ओके अच्छा, दो आपने कहा दिन तो था मैंने मुझे लगा कि आप नहीं नहीं सिर्फ हफ्ते में 2 दिन क्लासेस का कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स लाइक 5 days इन अ वीक। हाँ ये हो ओके सकता है कि 2 क्लासेस वीकेंड पे हम कर लें, शायद मैंने ये कहा हो, अच्छा, ऑन द हाँ वीकेंड। वीकेंड का कहा था तो मुझे लगा कि सिर्फ हफ्ते और इतवार को होगा। जी जी, वीकेंड पे इसलिए सो दैट आप अगर पढ़ रहे हैं या कोई कहीं काम करते हैं तो 3 days किसी ना किसी तरह बंदा निकाल लेता है टाइम, राइट। हाँ 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 आई बाकी बाकी एग्री। 2 दिन आप वीकेंड पे कवर कर सकते हैं। सो दैट वाज द प्लान कि अगर आप इफ यू थिंक यू आर लाइक इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द टाइम, मुश्किल है आपके लिए निकालना मंडे टू फ्राइडे, तो फिर आप ओके 2 क्लासेस सैटरडे संडे को भी ले सकते हैं ताकि ओके 5 क्लासेस कवर हो जाएं फॉर द होल इन वीक। ओके ओके सर। सो सर हम कब तक आपको इन्फॉर्म कर दें सर दैट वी आर विलिंग टू जॉइन द क्लासेस एंड लाइक आप अबाउट आवर इन्फॉर्म डिसीजन? आप कल तक कर दें, मुझे बता दें, आई मीन ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अच्छा मतलब यू आर ओके विलिंग टू ओके ज्वाइन। सर। और सर मतलब हमारी तरफ से तो पूरा कोशिश होगा ना कि मतलब मेरे भाई की तरफ से, मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ कि मैं करूँगा या नहीं ना सर, क्योंकि जी मैं जी, नया आया हो, जॉब्स और स्टडीज़ वगैरह मुझसे मैनेज नहीं हो रही, तो अगर लैंग्वेज भी हो गया तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा ना सर। तो सही ये है। सही। तो सर भाई तो कंफर्म है ना सर, लेकिन वो अपने तरफ से पूरा स्टडी करेगा ना, बाकी आप जितनी भी चीज़ें बताएंगे लाइक जी यूट्यूब जी, चैनल एनी अदर वोकेबलरी पर, तो एग्जैक्टली।
मतलब अच्छा, इसके इसमें एक बाद चीज आप भी आप इसलिए मैं करेंगे तो गाय थे तो कवर कर लेगा ना सर ये A1 का एग्जाम? देखिए, गोइथे का तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अगेन इट रिक्वायर्स कमिटमेंट कि देखें ओके टीचर अगर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स का काम है कि वो उन चीज़ों को फॉलो करे, एंड ही और शी शुड बी एबल टू प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि ओके लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप बीच में बहुत लंबी ब्रेक्स दे रहे हैं, लाइक एक हफ्ता गुजर गया, ये 1.5 हफ्ता गुजर गया बीच में और आपने नहीं पढ़ा, तो जो आपने पहले पढ़ा होता है वो भूल जाता है, जहन से निकल जाता है, बिकॉज इट्स नॉट योर मदर टंग। ठीक ओह है, यस आपकी एग्जैक्टली। जो अपनी जबान है, मदर टंग कभी भी नहीं भूलती। आपने जो बचपन से लैंग्वेज सीखी है, चाहे उर्दू है, पश्तो है, या इंग्लिश भी, अगर आपने बचपन से इंग्लिश में पढ़ी है, वो आपको नहीं भूलती। लेकिन इफ एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो अगर आप उसमें बहुत लंबी ब्रेक्स देंगे और यू नॉट कंसिस्टेंट, देन ऑब्वियसली आपको चीजें भूल जाएंगी। प्लस यस एक चीज ऑल्सो, एक चीज और जो मैटर करती है, वही होती है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट जो है वो 2 घंटे पढ़ता है बड़ी डिवोशन से और फोकस होके ना, बट देर इज अनदर स्टूडेंट जो सिर्फ 20 मिनट लगा रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों के एफर्ट्स में फर्क है, राइट? एग्जैक्टली तो वो जितनी बंदा मेहनत करता है, जितनी एफर्ट करता है, उतनी जल्दी वो चीजें सीखता है। सो मेरी तो हमेशा रिक्वेस्ट तमाम स्टूडेंट्स से ये होती है कि आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, लेकिन बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डूइंग। एक टाइम ओके स्लॉट बना लें, लाइक आप 1 घंटा रख लें किसी भी वक्त, रात को आपने 9 से 10 रख लें या 10 से 11, जिसमें आप सोच लें कि आपने सिर्फ ये जर्मन पढ़नी है। ओके सर। और और सर ये है कि आपके साथ जितने स्टूडेंट्स हो उनके लिए कोई ग्रुप वगैरह कम्युनिटी बनाते हैं कि ये आपस में थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करने? ग्रुप्स तो मैं हमेशा बनाता हूँ, ओके लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं भी करते, हर एक ही अपना एटीट्यूड होता है। यस यस एग्जैक्टली। ठीक है सर। सो और सर ये या गायते का अगर सर्टिफिकेट लेट सपोज ये 2 महीने का तो सेशन चलेगा, इसके बाद लेट सपोज ये 1 महीना और बाद यानी आज से 3 महीने बाद ये एग्जाम दे दे तो ये एक्सपायर तो नहीं होता जिस तरह आइल्स और टोफल वगैरह नहीं में नहीं, हमारे साथ 2 साल गोएथे होते का, हैं? जी जी, गोएथे का इंस्टीट्यूट, गोएथे इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे भी उनका एक पेज है, ओके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है? यस सो जो जो सवाल आपने पूछा, ये बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, और दैट्स व्हाई इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने। इट डज नॉट एक्सपायर्स, इट्स फॉर द लाइफ टाइम। लेकिन ओके उन्होंने एक और चीज जो मेंशन वहां पे की हुई है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो प्रेफर ये करती हैं कि जो 2 साल से ज्यादा पुराना ना हो ओके आपका A1 सर्टिफिकेट, राइट? तो ये ओके चीज आपने जहन में रखनी है, क्योंकि जब टाइम ज्यादा हो जाता है और आपकी और कोई प्रोग्रेस फर्दर नहीं होती उस लैंग्वेज में, तो वो ओके फिर सर। एज्यूम ये करते हैं कि जाहिर है बंदा भूल गया होगा, नाउ ही इज नॉट दैट गुड। अच्छा सर। और सर आप क्या प्रेफर करेंगे कि लेट सपोज ये एवान के पूरा प्रिपरेशन कर ले, इसके बाद एवान में अपियर हो जाए, इसके बाद A2 की प्रिपरेशन और फिर सर्टिफिकेट ले, या एवान के प्रिपरेशन के बाद A2 का प्रिपरेशन कर ले और डायरेक्ट A2 दे दे? देखिए, ये तो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट आई थिंक कि अगर आपका टारगेट A1 है, तो आप A1 की तैयारी कर लें और A1 का एग्जाम दे दें। A2 तक जाएंगे तो ऑब्वियसली A2 थोड़ा सा एडवांस है, तो A2 में अगर आप पढ़ेंगे मजीद, तो A1 तो आपका डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी की रेंज बढ़ जाती है ना, और ओके आपको ग्रामेटिकल रूल्स समझ आ जाते हैं, यू आर एबल टू राइट एंड स्पीक बेटर। तो वो A2 अगर आप करते हैं, थोड़ा सा वो भी कर लिया आपने, तो इट हेल्प्स इसमें कोई, लेकिन अगेन ओके इट्स योर प्रेफरेंस कि आप A1 की पूरा कोर्स करने के बाद एग्जाम देना चाह रहे हैं या किस टाइम पे देना चाह रहे हैं। ओके। सो सर हमें तो रिक्वायर्ड A2 है ना, मैं जर्मनी उसको बुलाऊंगा, अच्छा, इंग्लिश ही टाट में मैं एडमिशन उसको कराऊंगा, लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि A2 कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। श्योर, इट्स अप टू यू डेफिनेटली, ओके सर। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। सो अगर आप A2 पढ़ना चाह रहे हैं बाद में, तो A2 पढ़ लें। आई मीन प्लान आपका अपना है, अब आपने देखना है कि मुझे आप कहेंगे तो मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन इट्स अप टू यू कि किस स्टेज पे आपने एग्जाम देना है और कौन सा देना है। सो ओके ये सर। स्टूडेंट को पता है कि खुद खुद भी फीलिंग होती है कि यार अब मैं तैयार हूँ, आई शुड गिव द एग्जाम, राइट? हाँ हाँ। सर तो वो आप अगर आप, अपने सेशंस में तो लास्ट में देंगे ना प्रिपरेशन, मतलब कि किस तरह एग्जाम को अटेम्प्ट करना है एवन यस का? यस, यप एग्जैक्टली, डेफिनेटली, वो मैं सारा कुछ ओके बताता हूँ। आई आई कवर द सैम्पल पेपर्स जो गोयते के हैं, उनकी ऑडियोज, ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस,
क्योंकि ईमेल आती है आपकी राइटिंग जो एग्जाम होता है। फिर Okay. जो आपका स्पीकिंग एग्जाम होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपने एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, फिर Okay, sir. सेकंड पार्ट में वो कार्ड्स देते हैं जो कि जिस पे वर्ड लिखा होता है और आपने उस वर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछना होता है अपने साथ जो भी Okay. पार्टिसिपेंट होगा। Okay, sir. फिर एक तो इस तरह की डिफरेंट थर्ड पार्ट भी है जिस पे एक पिक्चर बनी होगी एंड अगेन यू Okay. हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट। तो ये तमाम चीजें जब हम ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई मीन इट इज अ Okay. पार्ट ऑफ इट, ये इससे Okay, अलग sir. नहीं है। सही है सर। तो सर ठीक है, टाइम ख़त्म हुआ, आपका भी मसरूफियात होंगे, तो सर हम अपना डिसीजन ले लेंगे। कल मैं आपको ईमेल कर लूँगा। इसके बाद सर चार्जेस वगैरह ट्रांसफ़र करने का आप मुझे बता देगा। तो श्योर श्योर, और ठीक है, बिल्कुल। वो सारे एडवांस में होती हैं ना सर? जी जी, एडवांस में होती हैं। एंड 16,000 राइट सर? यप, एग्जैक्टली। ओके ओके सर, सो आई विल डू दैट एंड इंशाल्लाह सर मैं कल मैसेज कर लूँगा, ईमेल कर लूँगा आपको। श्योर श्योर, चलिए ठीक सही है है, जी, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू अटेंडिंग सर। दिस सेशन। इंशाल्लाह फिर आपसे बाद में बात होगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया ओके सर, जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।